हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी कंट्रेरियन इन्वेस्टर। आज हमारा टॉपिक है वीकली अपडेट के लिए पोर्टफोलियो अपडेट देखना है कि क्या वैल्यू रहा। आई वाज नॉट एबल टू अपलोड दी वीडियो ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, सो आज हम वीकली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं एंड लेट्स चेक हाउ द पोर्टफोलियो हैज़ परफॉर्म्ड। Coming on the portfolio, if you see the total portfolio, it has now crossed 30 lakh of the total value, which was earlier around last week 26-26 lakh था because I bought shares worth 3 lakh more. 30 लाख का पूरा पोर्टफोलियो भी है और अगर हम इक्विटी सेगमेंट पे देखेंगे तो आई इन्वेस्टेड अराउंड 25 लाख। कमिंग टू माई बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द पोर्टफोलियो, तो जो सबसे बड़ा है वो तो हमारा इस समय गोल्ड बीज है। सोना मैंने 2.5 लाख का ले रखा है एंड एज आई हैव टोल्ड वेन एवर इट विल गो -2% इन द वैल्यू आई विल एड 50,000 मोर एंड कीप ऑन एडिंग बिकॉज इट्स अ हैज, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ डाउनफॉल। और उसने इस मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, तभी मेरा पोर्टफोलियो ओनली -1.6% डाउन है, जबकि निफ्टी इज 6 and 7%, निफ्टी 500 इज 6 और 7% डाउन फ्रॉम द टॉप। कमिंग टू द बिगेस्ट स्टॉक होल्डिंग इस समय जो है वो हमारा यूनाइटेड स्पिरिट है 1,40,000। अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट चेक करोगे कि टू चेक वेदर समथिंग इज रॉन्ग विद द यूनाइटेड स्पिरिट, सो विल नॉट फाइंड एनी मेजर थिंग विच हैज गॉन रॉन्ग। अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट एक द स्ट्रेटजी ऑन विच आई हैव टेकन इज रेंज बाउंड एंड मूविंग एवरेज। व्हाट इज रेंज बाउंड एंड मूविंग एवरेज? जब भी स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करता है and it goes again fall below the all three moving average 200, I'll just change, यहाँ पे मैंने एक स्टडी कर रहा था इसलिए मैंने 100 कर रखा था। I will simply put it 200 day moving average, simple moving average. So whenever any stock goes below 200 day moving average like here, and it also a support on the range, तब मैं बाई करता हूँ। It has worked well for me because एक तो जब इतना डाउनफॉल होता है और उस समय अगर एट दैट टाइम फंडामेंटली पोर्टफोलियो के साथ कुछ बहुत गलत नहीं होना चाहिए, मतलब इट्स फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट का क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, सो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 10%। ठीक है, ऐसा कोई मेजर लॉस नहीं है। लेट इट वॉज -5, -1, 10%, सो इट इज़ अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट कंपेरेटिवली। तो बट द प्राइस इज़ वेरी डिस्काउंटेड, सो आई बॉट इट, वो हमारा वैल्यू था। अब देखते हैं होता क्या है। हेयर ऑल्सो ऑलवेज इट वॉज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, देन इट टुक अ बूम, इट ट्राई टू ब्रेक आउट विथ कप एंड हैंडल या कोई भी फॉर्मेशन लोग यहाँ 30 मिनट्स पे जाके देख सकते हैं। इट गेव अ ब्रेकआउट बट अगेन इट फेल डाउन, और जो भी ऐसा लेसल हिट होके इट फेल डाउन वेरी ड्रास्टिकली। यहाँ पे अगेन इट टुक सपोर्ट एंड इट बाउंस्ड बैक, अगेन सेम इज हैपनिंग हेयर विद दिस कैंडल। ऑलमोस्ट 5 days जब मार्केट कहीं नहीं मूव किया, इट रोम्ड अराउंड द सपोर्ट। और 5 days हम क्यों गए? सिंस जुलाई लास्ट इट इज मूविंग एट इट सपोर्ट and it will again move towards its profit. So I will get a good return if I will exit at my 1700. I think it is somewhere around 23-24% I will get. So I'm hoping for that. Let's see. ये है मेरा United Spirit which is I bought, currently I am in at a loss of 0.4%. But if you see something on Thursday जब market was almost flat, the portfolio was up by 0.2%. So not a bad thing for a portfolio. एक शेयर जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जो आई एम अबाउट टू सेल फ्रॉम माई होल्डिंग, विच इज़ ऑफ पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। इफ़ यू सी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ 7.35% करंटली। इसका डिविडेंड भी आ चुका है ऑलमोस्ट 0 पॉइंट आई थिंक 6-7% जिसको जोड़ लेंगे तो अभी टोटल जो है हमारा प्रॉफिट 8% है। इफ़ यू विल सी व्हेन आई बॉट दिस, ओके, सो यू विल सी द व्यू ब्रेक डाउन। सो आई एम एक्यूमुलेटिंग, आई वॉज एक्यूमुलेटिंग स्लोली, बट पहला मैंने 28 जुलाई को बाई किया था। सो 28 जुलाई को अगर आपने बाई किया है एंड इट इज़ अराउंड 1 मंथ, तो 8% और समथिंग इज़ नॉट बैड। एंड वाई आई एम सेलिंग, आई विल शो यू वाई आई प्लान टू सेल इट। इफ you'll open Pidilite Industries and you will come to know that there is some chart. Okay, see, this is a गुड रेजिस्टेंस, एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, एंड बार बार यहाँ से स्टॉक फॉल डाउन हो रहा है ना। इट ऑलमोस्ट ट्राई टू ब्रेक डाउन, यहाँ पे इट इज़ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ऑल्दो कुछ लोगों को यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न या ये सब भी चीज़ें दिख जाएंगी,
But for me, if it is rejecting again and again, it will fall down. So I will see whether 2-3 more days it will able to touch 3200 तक जाता है, तो maybe this can be my next target I am holding. So let's see. मतलब I will decide in coming 1 week I have to sell the PD light or not. If you guys have any, because it's a 3200 is a very good resistance and nothing wrong. I have gained 8% 9% in 1 month. So no love lost also कि बहुत ज़्यादा loss हो गया. I have बहुत holding period. I am exiting with only 8%. If you guys have any other perception on the likely target or likely aim with which we should hold, you can comment. Coming on the next thing, if you'll just remove the PD light, in the equity segment, the second biggest investment is my PGHH. Okay, PGHH, if you I will open, I basically invest in large cap only, so not very much drawdowns happen in my portfolio. If you will open the PGHH, so I have taken it for a long, at least for the value of 1700. That is my first target. So I'm going to, if you will hold for 1700, then I think you should aim for at least 1 year return, because उससे पहले अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो तो नो वैल्यू. अगर आप PGH, so it is 28%. I'm happy getting 28% in 1 year or 1.5 year. So that's why I'll be holding PGHH. So yeah, we'll come again someday when whole portfolio. Same goes for Bajaj Housing Finance Limited, which was up 3.83% on Thursday, and I have a good share in it. The largest holding on Bajaj, I think Bajaj Housing का ही quantity सबसे ज़्यादा है, 1143 units I am having. इसके अलावा अगर हम जाते हैं, I bought Coal India on Thursday, so my total investment has reached 1,20,000. And Sanofi is again, I think it will take back or move from here. I have very high hopes from Sanofi. Let's hope this is support on which it is, and I am hoping कि it will not, it should not go below this, at least below 4700. That's the last which it should fall down. Otherwise, it should revert from here only, around 5000 level, I would say. यहाँ से मूव बैक हो जाना चाहिए, बट द लास्ट विच आई एम होल्डिंग इट शुड नॉट गो बिलो 4700, because I have a target of at least 60% from here on the range bound. Range bound has worked very well for me. Throughout my investment journey, if the stock is available at a discounted price below all three moving averages, it is a important support also. So here I trade. It has done very well in the past also under this. If we go on the weekly time frame, so this is the pattern which I am talking about. Okay, coming on my total holding and portfolio, currently 30 lakh is the invested. Loss in my portfolio is of 1.3%, and I'm mainly invested in large cap and mid cap. Apart from this, I have a gold of currently 8.6%. Slowly it will take to 12 or 13% at least. After that, to max as I grow older, will take to 15 to 20%. Gold is of 28%. In the large cap, the largest holding of United Spirit, Bajaj Housing Finance Limited, and PSU Coal India, then Infosys. I aim not to buy more than 5% in any one share. Indian Hotel, Havels, so these are the some largest holdings. Okay. Apart from this, if you see my investment journey, I will just show you my account value. Remove this. I'll just show you. Last year, before when everybody was very bullish, I exited my whole portfolio in May 10, when my portfolio value was around 16 lakh. And I kept on adding this money in bank, FD मैंने किया, not you can say FD, but some, banks which were giving 7%, 6.5%. I distributed in 2-3 accounts, but kept on doing small amounts because you should never be out of the market. And again, I have started again building aggressively, and currently the portfolio, as you all can see, has reached a potential of 30 lakh. So I hope कि, but still I'm cautious and I'm holding a good amount of cash. Not good amount, but you can see good amount. What I will say, 12, 22 or 25% I'm in the cash as of now. If you look on the portfolio insight, अगर आप इससे what the total holding I'm having. So let's see the portfolio beta, which is very low for my 0.7%, so not moving very much.
PE is high, but it is not due to whole portfolio. Some stocks which are परफॉर्मेंस उनका पी थ्रू आउट हाई रहता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है. सबसे लेस इन्वेस्टेड जो मेरा है वो है 5 पैसा में, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा लॉस भी है 23%. इट इज़ आई बिलीव इट टू बी गिव एटलीस्ट डबल, बट अभी एवरेज करने का मेरा एम नहीं है. एटलीस्ट टिल द टाइम इट इज़ -30%. नथिंग टू वरी बिकॉज केवल 40,000 किया है. ऑलमोस्ट 1.5% आउट माई पोर्टफोलियो. Bajaj Auto, I am waiting for it to come to the level of around 8,000. Then it will be a good. Pidilite, I am about to book profit. Varun Beverage Limited, good, nothing bad. Hindustan Zinc PSU. So holding it for at least 25-30% gain from here. Let's see where it goes. So we are almost 47 now. Started only with 2-3 videos. I hope we will soon reach 100 mark. And if you have not subscribed, please subscribe to the channel so we can reach where we aim. For the tomorrow basis, I will come on the daily portfolio update. And thank you for watching. Hope you like it.